हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं आपका तरुण गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलनेस। हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था ऑन द सब्जेक्ट गट हेल्थ वाज वाइडली अप्रिशिएटेड बाय आवर व्यूअर्स, और मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक पे एक पॉडकास्ट और किया जाए। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर अनीता मधोक से रिक्वेस्ट किया टू स्पेयर सम टाइम एंड कम ऑन आवर चैनल टू discuss more about this topic. So welcome you ma'am on our channel again today. Thank you. It's an honor and my pleasure to be here, and I'm looking forward to the next few minutes of good discussions. Sure ma'am. Thank you for coming again. लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ा बेसिक फंडा समझा माइक्रोबायोम के बारे में, गट हेल्थ के बारे में। उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए आज हम आपसे कुछ दो चार और क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमारे व्यूअर्स के भी बहुत ही दिल के क्लोज क्वेश्चंस है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कि ये जो माइक्रोबायोम है, गट हेल्थ है, वो क्या केवल हमारे पेट से रिलेटेड होता है या ये हमारे पूरे फिजिकल और इमोशनल को इफेक्ट करता है? हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि सारी बीमारी, सारी जिंदगी हमारे गट से स्टार्ट होती है। Now, अगर आप if you look at the human body, हमारे यहाँ we have the first defense against the external environment is our skin. So our skin is the first point of attack for all germs, microbiome, all kinds of diseases and illnesses. So our skin protects us. So otherwise we would be very sick people. The second point of contact with the external environment is our digestive system. And it is very, very important because that's where we put food into our mouth, we put water into our mouth, we take in all whatever we take in, and it goes into our gut. And our gut has to do the job of understanding what is good here and what is not good here, what should I absorb, what should I not absorb. So we say that you are what you eat, and this is definitely true. और जैसे हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि योर गट माइक्रोबायोम इज द सोर्स ऑफ ऑल योर हैप्पीनेस, एलिमेंट्स, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग। राइट। सो अभी आपने से आयुर्वेद के बारे में बात की, तो मैं तो अगेन आई जस्ट गो टू द ओल्ड साइंस में भी, जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स ने हमारे साथ यूज किया जब भी हमारा मतलब पेट खराब होता था या एसिडिटी हो रही है, थोड़ा इवन ओवरऑल बॉडी को भी अच्छा नहीं लग रहा, तो पहला क्वेश्चन उनका यही आता था कि हमारा स्टूल कैसे पास हुआ या हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारा पेट कैसा फील कर रहा है। तो क्या ये वही चीज है इन टर्म्स ऑफ द माइक्रोबायोम आज जो हमारी रिसर्च कहती है, क्या यही हमारी ओल्ड साइंस को भी रीअफर्म करती है? डेफिनेटली यस। जो भी हमारे आयुर्वेद में लिखा है, आजकल के मॉडर्न साइंस पूरा वही सब कुछ रीअफर्म कर रही है। सारा रिसर्च इज सेइंग दैट ऑल दैट इज रिटन देयर इज वेरी ट्रू। सो व्हाट डज द माइक्रोबायोम डू? लास्ट टाइम तो हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द माइक्रोबायोम, कि होता क्या है, और ये जानकारी होना जरूरी है सब हर एक इंसान को। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ डज इट वर्क। तो सबसे पहले तो लाइक आई सेड, आप खाना खाते हो, इट इज द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट एनीथिंग रॉन्ग और बैड और जर्म्स दैट माइट बी इन योर फूड। सो इट इज द फर्स्ट डिफेंस. So whatever gut bacteria we have, our microbiome we have, helps to protect us from the world outside. That's the first thing. Second, most important is that, human beings are considered superorganisms. कि हमारे तो सिर्फ 23 pairs of genes होते हैं हमारे हर एक सेल में, जिसमें लगभग 15-20,000 जीनोम्स होते हैं, जीन्स होती हैं, और that is, we think we are all of those genes that are in our cells. But जो हमारे gut microbiome होता है, उसमें almost 3 million different genes होती हैं, because बड़े सारे strains of bacteria होते हैं, strains of yeasts and viruses are there, and they have their own genes and their own genetic makeup. So those genes are also part of my body and part of my system, and they're regulating me as much as anyone else. So the more diverse this microbiome is, the better it is for our gut health. So biggest factor is how diverse it is. Second is, whatever food we eat, the gut microbiome tends to respond to that. So if I eat good food and healthy food, then my microbiome becomes good and healthy. If I eat bad and unhealthy food, my microbiome becomes bad and unhealthy.
तो कहते हैं ना, there is a saying that you are what you eat. So you are what you eat, definitely, because what you eat is what your microbiome eats, and your microbiome is a part of you. So that's very, very important to understand. So ये करता क्या है gut microbiome? It's ये very important. It creates, first of all, it is a gatekeeper for the digestive system. आपका जो भी खाना खाते हैं वो उसको देख लेता है कि it sees whether it's good or healthy. It's not good, not healthy. There are certain germs in that doesn't work. So it deals with as the first level of filtration of how much of your food will be absorbed, what will not be absorbed in your body. So it serves as a gatekeeper. It lines your intestines, all these bacterial states, and it does not let things which are not absorbable to be absorbed by your body. Second, it manufactures certain byproducts. So ये जो छोटे छोटे bacteria हैं, they are digesting your food, they are eating some of the products that you are eating, and they are creating byproducts. और ये byproducts बहुत important होते हैं हमारी life and हमारे survival के लिए. So like for example, vitamin K, it's a very important vitamin, because if you have a cut in your body and you don't have vitamin K, you can bleed to death. Many people have deficiency of vitamin K. Now we do know that vitamin K is manufactured only by gut bacteria. You cannot eat a tablet of vitamin K. You cannot get it from the market and boost your vitamin K levels. The only way you can have vitamin K in your system is if your gut bacteria are in place and are in order. They will manufacture vitamin K. Same way, they also manufacture certain kind of amino acids. They also help to regulate the digestive hormones, in your body, which help to digest. They regulate different organs. So there are lots of nerve endings in our gut, as many as there are in the brain. So some of the byproducts that this gut microbiome produces are neurotransmitters, and that transmit signals to the brain, and then the brain regulates the organs. The brain will regulate your heart, liver, kidney, lungs, and all the other organs of your body. The brain helps to regulate, the gut helps to regulate your reproductive system also. So your sexual health, everything is impacted because of what you eat. So these neurotransmitters are very important. Sometimes good bacteria that you may be having in your body help to, conquer and kill the bad bacteria that you also have in your body. So if your diet is well balanced, your good bacteria will become more and stronger, and your bad bacteria will become weaker. That's also important. So there are many such functions that this gut microbiome has. I've only shared some of it. But yes, there seems to be a lot of direct connection, as far as our research is concerned, with how much weight you will have and your weight loss. Sometimes, people who lose weight, they tend to gain it back, or they lose weight beyond the point they becomes a plateau. They cannot lose any more weight. The reason is because there are certain bacteria in the body that are resisting that weight loss. And that's what your insulin resistance, it seems to regulate. It seems to regulate your inflammation tendencies in the body. Your body में inflammation हो जाती है, because of which you can have Alzheimer's and PCOS and diabetes and cardiovascular disease are all linked to inflammation in the body. So it seems to regulate that also. So that's how it works. राइट. सो मैम, जैसे अभी तो इतनी हम साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी बढ़ गए. सो लेकिन जब पहले ये साइंस नहीं थी, तभी भी हमारे टाइम, मतलब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, उनसे भी पहले, जब भी हमारे को कोई इशू आता था पेट रिलेटेड या और अच्छा फील नहीं होता था, तो हमारे ग्रैंड मदर या पेरेंट्स यही कहते थे या पूछते थे, पहला क्वेश्चन यही पूछते थे कि आपकी स्टूल कैसे हुई है एंड हाउ यू आर फीलिंग. उस समय चाहे वो आपको हल्दी वाला दूध हो गया या हींग आपके पेट पे लगाना, ये जो छोटी छोटी जिससे आपकी एसिडिटी हटती थी, तो क्या ये वाली जो साइंस है, इज इट बीइंग रीअफर्म्ड टुडे थ्रू रिसर्चर्स कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गट आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए? Definitely, a lot of these practices are now, being proven by research that they are workable and they work very well. So, जैसे आपके जैसे हल्दी है, it's a very common spice in our food. और थोड़ी सी हल्दी हम लोग डालते हैं खाने में, and that is enough. You don't have to put too much haldi in your food. Just a little bit of haldi helps to keep the good bacteria healthy,
and it helps to conquer the bad bacteria. Also, because bad bacteria is being conquered, your inflammation levels come down. तो आप देखते हैं कि जैसे कहीं भी आपको कट होगा, कोई जख्म हो गया है, तो इसमें हल्दी का पेस्ट लगाते हैं. तो हल्दी का पेस्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें जो भी जर्म्स बैक्टीरिया बाहर से अंदर जाने के लिए इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर. इट किल्स द बैड जर्म्स that cause harm, and it reduces the inflammation. जो सूजिश होती है वो कम हो जाती है. So same way हमारी gut microbiome के अंदर भी it reduces bad bacteria and reduces the inflammation. So ऐसे कई चीजें हैं जो we can do to improve our health. Okay. So अब इन सिंपल टर्म्स में हमारे जो व्यूअर्स सबसे ज्यादा जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए शायद वेट कर रहे हैं आपका, कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे गट माइक्रोबायोम को हर्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और ऐसी क्या चीज हम करें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, क्या खाएं या किस तरीके से खाएं कि हमारा माइक्रोबायोम स्ट्रांग हो जाए और हैप्पी हो जाए? So आज जो हम बात करेंगे वो इज फॉर नॉर्मल हेल्दी पीपल, नॉर्मल पीपल हु आर लिविंग नॉर्मल एवरीडे लाइव्स. कोई किसी को कोई खास बीमारी हो क्या, कोई खास problems हो लाइफ में, तो not for them. A lot of people have a lot of leaky gut syndromes and a lot of celiac disease and a lot of other gut problems. This is for normal everyday people. When we eat, first of all, the fundamentals of your diet. So there are a lot of things that we eat which are not friendly to the gut, which cause harm. So the first is whether you have highly processed foods. तो अब आप कैन फूड ले रहे हो या कोई जूस ले रहे हो विच इज पैकेज्ड एंड नॉट फ्रेश एंड प्रोसेस्ड, तो उसमें थोड़े प्रेजर्वेटिव्स होते हैं. केचप वगैरह में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं. अभी लिखा तो है लेबल में क्लास 2 प्रेजर्वेटिव्स परमिटेड एंड व्हाट नॉट, बट एक्चुअली स्पीकिंग वो प्रेजर्वेटिव्स क्यों होते हैं कि किसी भी खाने के ऊपर की कोई जर्म्स आ जाएं, दे शुड नॉट मल्टीप्लाई ऑन द फूड. सो इट्स मेंट टू किल दोज जर्म्स. But when we eat that, it also that element kills our microbiome. It may not kill my big body, but it kills those tiny, tiny bacteria. So that's a very harmful thing. Second biggest enemy is antibiotics. Every time you have an antibiotic, first thing your gut goes for a sick. So कई बारी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, फॉलिक एसिड भी देते हैं कि थोड़ा बहुत आपका गट चलता रहे. But that does not restore your gut microbiome. Every time you have a dose of antibiotics, it takes almost a year for your microbiome to come back to normal. So इससे अच्छा आप हेल्दी खाओ ताकि आप बीमार ना पड़ो, ताकि आपको एंटीबायोटिक्स ना खाने पड़े. Because the antibiotic kills your microbiome little by little, little by little, little by little. Second is anything that is very high in sugar, or even small amounts of sugar sometimes, they feed the wrong bacteria. So there are certain funguses that feed on sugar, which are not good, like Candida is a kind of a fungus. It feeds on sugar. It lives in our gut. So the more sugar I have, the more that fungus will grow, and that's not good for my health. That's a bad bacteria. That's a bad part of the microbiome. Food additives, emulsifiers, artificial sweeteners, like your aspartame and saccharin and all, those are very harmful because they feed the wrong bacteria, or they kill the bacteria all completely. Alcohol intake destroys your gut microbiome. आप एक alcohol में ले लो, कई बारी alcohol is used as an antiseptic, why? Because it kills germs. And if it kills germs, it also kills your gut microbiome. इससे अच्छा तो आप डेटॉल पी लो, तो डेटॉल से भी वो सब सफाई हो जाती है. So what we can do in terms of our diet, which is gut friendly, have a variety of colorful vegetables and fruits and all kinds of foods. The more variety of food we have, the more, it will be good for our gut health. So there are colors as one variety. So there'll be purple things like beetroots and kali gajar aati hai, that's purple color, jiski kanji hum log banate hain. Then there is, purple cabbage, there's bengan, these are all purple color. Then there'll be blue color foods that you will also get, which comes like mostly blue pea flower. You can make a tea of that. And then there is red. We all know red tomatoes, apples, etc. We all know yellow fruits. We all know, orange, green. So the more rainbow of food you have, the better it is. So in a week, you should make sure you have all colors of vegetables.
in every week. Every day of the week, one different color of vegetable you can cook in different recipes and have. Second is whole grains, not refined grains. So have whole wheat atta, have whole wheat, millets, have whole, not the ones which are refined and things like maida, which are removed from healthy fats, because our body is made up, our brain is made up of fat actually. Every cell wall is made up of fat. So the fat is a very important part of our survival process. We cannot eat completely fat-free diet. We cannot live that way. We'll slowly we'll lose our ability. So लोग कहते हैं कि तेल कम खाओ. मैं कहती हूँ तेल सही मात्रा में खाओ, but the right kind of तेल, which kind of oil you are using is important. जो आपके ओमेगा 3 में रिच हैं, आपके ऑलिव ऑयल्स हैं, और मस्टर्ड ऑयल है, और कोकोनट ऑयल है, देसी घी है, ये सब अच्छे ऑयल्स हैं खाने के लिए. रिफाइंड ऑयल्स में तो डेफिनेटली केमिकल्स बहुत होते हैं, बट सीड ऑयल्स जो होते हैं वो उनमें ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है. तो जो ओमेगा 6 है दैट इज हार्मफुल फॉर अस. सो जो सीड ऑयल होता है जैसे सनफ्लावर, ग्राउंडनट एंड सैफलावर एंड तिल ऑयल, ऑल दीज ऑयल्स, इनको आप चेंज करके खाया करो. डोंट हैव एवरी टाइम द सेम ऑयल. आप छोटी छोटी क्वांटिटीज लो और इनको चेंज करो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गट हेल्थ. Then, if your quality of food is also good, like when you are buying a chicken, try to buy a chicken which is non-GMO and not fed with antibiotics. जितना ऑर्गेनिक खा सकते हैं खाइए, बिकॉज पेस्टिसाइड का रेजिड्यू रहता है आपके खाने में. सो क्वालिटी ऑफ फूड मेक्स इट गट फ्रेंडली. How you prepare your food is important. If you eat it raw, if you eat it cooked, if you eat raw food, it's very good for your health, but cooking food helps the absorption. आपका microbiome can deal better with cooked food rather than with raw food. Raw food से वो थोड़ा different होता है. तो how you cook is important. Do you fry the food? Do you cook on high heat? कहते हो जितना भूनो तो अच्छा है. Or do you steam it and bake it, and do you air fry it? So how you cook the food is the healthiest food is way to cook food is to steam it. But steam करने के बाद ऊपर तड़का मारने का, that is always the most healthy way of eating food. But कई बारी हमको grilled और fried भी खाना होता है. So how you cook the food is try to avoid इतना आपका फ्राई हो कि ब्राउन और ब्लैक हो जाए. जैसे तंदूरी चिकन आप देखोगे, वो तंदूर में डालेंगे, जब तक बाहर से ब्लैक नहीं होगा तब तक नहीं खाएंगे. तो दैट ब्लैक पार्ट ऑफ द चिकन इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर योर माइक्रोबायोम. क्योंकि उसमें ना चार बॉइलिंग बोलते हैं, चार ग्रिलिंग बोलते हैं ना. चार ग्रिलिंग मीन्स bit of like something like a charcoal kind of thing that comes and it goes, it kills a lot of bacteria. So try to avoid too much blackening of your food. Grilling थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बेटर है, बट सम अमाउंट ऑफ ग्रिलिंग इज ओके. इफ यू डू अ लाइट सौते इंस्टेड ऑफ ग्रिलिंग, इट इज बेटर. सो जितना आपका फ्रेश फूड है, नॉन प्रोसेस्ड है, नॉन पैकेज्ड है, उतना अच्छा है. सो क्वालिटी, हाउ यू ईट also helps your gut microbiome. Body needs to be relaxed. अभी आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, लॉट ऑफ पीपल से ग्रेस बिफोर दे ईट देयर फूड. आप खाने को ब्लेस करो. I wish this food is going to do me good today, and I love this food that I'm going to eat. So how you eat in a relaxed frame of mind. If you eat guilty, I went for a party last night, and a lot of people were eating very nicely but feeling very guilty at the same time. अरे ये fried है, इसमें तेल ज्यादा है, इसमें ये है, इसमें. The guilty feeling kills you more than the food kills you. Because my father used to say कि जिस इमोशन से खाते हैं वही इमोशन हमारे बॉडी में absorb हो जाता है. That is how the food will be digested. So eat, if you have to cheat on good healthy food, eat it with a joy and say, आज मैं cheat कर रही हूँ, आज मैं enjoy करूंगी अपना ये वो. So आइसक्रीम खा रहे हो तो उसको bless करके खाओ, समोसे खा रहे हो bless करके, or don't eat with guilty conscience. So be mindful of your eating practice. What is your taste in your mouth? How does it feel? So enjoy your food. Taste it fully, taste it thoroughly. Be mindful. Eat slower, because the more we connect with our food that we eat, the more it will feed my microbiome, it will feed me better. Chewing of food is very good also. You have to chew the food. Make sure that, we call it a bolus. When we swallow the food, what goes down is the bolus.
that bolus must be smooth and round and must not contain big chunks of food, because the big chunks, when they go into your stomach, that causes a lot of problem for digestion. And our microbiome is very tiny, tiny bacteria. They cannot deal with those big chunks of food that go into your stomach. And they mostly it's very hard to digest when you're eating food without chewing it properly. So proper chewing. So there are these little few practices. Adding herbs and spices. Something like basil, when you're making a nice pesto sauce with basil, it has antimicrobial, anti-inflammatory properties. Basil is like tulsi, uska anti-inflammation hota hai. So kali mirchi is very good for absorption of your food, and it helps to release constipation. Elaichi also helps to reduce your inflammation in your body. Very good for bloated feeling. If you're having bloated feeling, add elaichi to your food. Dalchini is very good for blood sugar regulation. Things like saunf contains a lot of fiber. Khane ke baad thoda saunf kha lo, which is very common in India practice. Have that saunf. That fiber in the saunf is what our gut bacteria really likes to enjoy. Have raw garlic. That also feeds my gut bacteria, the right bacteria. Right. Ginger, turmeric, haldi in the food, all these are very good beneficial spices. So enjoy food which is well spiced, and so these are few practices we can. So one thing I think in last episode also you told, along with these things, were that some of the fermented food, and one of them is like definitely curd and dosa. These 2-3 things actually brings a little adding or for the betterment of the gut. तो कर्ड, डोसा, इडली, which are fermented, एक कीफिर होता है आजकल, sauerkraut बहुत खा रहे हैं, वो कैबेज का किमची जो होता है जी भी खाते हैं, वो भी fermented होता है. कांजी पीते हैं नॉर्थ में बहुत, which is very good for, it's all fermented food. Then certain kinds of lime pickle, जैसे plain lime का pickle होता है, वो ferment हो जाता है, black हो जाता है, that's very good for your, because it gets absorbed by your microbiome very well. So anything that's fermented contains lactobacillus, bifidobacterus. These are all strains of bacteria which are very beneficial. So वो definitely खाना चाहिए. राइट मैम, राइट. मुझे तो ऐसा लगता है कि आज कम से कम इस वाले एपिसोड को सुनने के बाद हमारे व्यूअर्स को काफी क्लैरिटी आई होगी इन टर्म्स ऑफ देयर डूज एंड डोंट्स, एंड अगेन दे वुड हैव अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ द माइक्रोबायोम, और हम किस तरीके से किन चीजों से उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो कि एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स हैं और जो हमारी लाइफ को ही बेटर बना रहे हैं, नॉट ओनली फिजिकली एंड एज वी सेड दैट इमोशनली एंड मेंटली आल्सो. इट ब्रिंग्स दैट काइंड ऑफ बैलेंस इनटू आवर लाइफ. We also understand the concept of brain gut axis and their relationships. So I'm sure इस एपिसोड को सुनने के बाद हमारे व्यूअर्स एटलीस्ट कुछ अपने खाने के स्टाइल में एक तो चेंज लाएंगे, कुछ चीजों को ऐड करेंगे, कुछ हर्ब्स ऐड करेंगे which will bring soothness to their gut also and will strengthen their microbiome, ma'am. Thank you very much for sparing time today, ma'am, and I'm sure अभी और इस टॉपिक पे हम और डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, मैम, एंड वी विल कनेक्ट विद यू एंड विल गेट मोर व्यूज ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम यू, मैम. थैंक यू वेरी मच, मैम. थैंक यू सो मच तरुण. जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहती थी, आज का एपिसोड जो है, दिस इज फॉर नॉर्मल एवरीडे पीपल. राइट. थर्ड एपिसोड जो करेंगे ना, दैट विल बी फॉर स्पेशल places where gut microbiome is deficient. How do we correct the balances? Sure. And how do we restore gut health in cases where it has been damaged for some reason? Sure, ma'am. Sure. Thank you very much again, ma'am, for coming and giving your views on this topic, ma'am. Thank you. Thank you.